My dear students, this is fourth video lecture of integers in which we will learn about multiplication of integers, properties of multiplication of integers and division of integers. So first of all, we have multiplication of integers. We have some notable points you will have to learn. First is minus multiplied by minus, yani multiplication of same sign, that will be positive. Second is plus into plus, that will be also plus, positive. Third is plus into minus, yani product of opposite sign, that will be minus. Fourth is also minus into plus, that will be minus. yani same sign, yani minus into minus क्या होगा, प्लस होगा. प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस होगा. सो अब एग्जाम्पल यहाँ देखो. सपोज पहला एग्जाम्पल मैंने लिया -6 और -9. सो -6 और -9 दैट विल बी पॉजिटिव बिकॉज -6 इज negative integer or -9 is negative. So negative and negative product will be positive. Second, we have 6 into 9, though both are positive, so product will be positive. So 54 is positive quantity, positive integer. Third is -6 into 9, opposite sign quantity. So -6 is positive and 9 is -6 is negative, sorry. -6 is negative and 9 is positive, so product will be -54, दैट इज निगेटिव. यानी एक मेरे पास पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव क्वांटिटी है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -54. दैट इज ऑल्सो ए निगेटिव, दिस इज ऑल्सो ए क्या, व्हाट, निगेटिव क्वांटिटी. 9 इंटू -6 दैट इज ऑल्सो क्या, 54, -54. फिफ्थ जरा ध्यान से देखना, -1, 2 इंटू -3 और -4. मैंने इसको ब्रेक कर लिया है, या तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो ब्रेक करके भी कर सकते हैं. मैंने ब्रेक कर लिया है दो पार्ट में इसको, -1 और 2. सो एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, प्रोडक्ट क्या होगा, -1 इंटू 2 दैट विल बी -2. और -3 इंटू -4 क्या होगा, 4 3 जा, टेबल कितना होता है, 4 3 जा 12. सो 12 क्यों होगा, क्योंकि 3 भी निगेटिव है और 4 भी क्या है, निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 12 होगा. सो अब मेरे पास -2 आ गया और 12 आ गया, तो एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, निगेटिव होगा. तो 12 में 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, -24. तो -24 एक निगेटिव क्वांटिटी हो गया. या हम ऐसे भी कर सकते हैं, केवल हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके उसके बाद साइन की मल्टीप्लाई अलग से कर सकते हैं. लाइक हम लेफ्ट टू राइट अगर बढ़ें तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 2 होगा. 2 में फिर 3 से करो, कितना होगा, 6 होगा. फिर 6 में 4 से करो, कितना होगा, 24 होगा. हम जरा साइन को देख लेते हैं, तो माइनस और माइनस, 2 माइनस है, 3 माइनस है, यानी दो माइनस का प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस होगा. और फिर प्लस इंटू तीसरा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस. सो -24 इज आवर आंसर. सो वी विल सी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. Here we have properties of multiplication of integers. First is closure property of multiplication. So what is this? Product of any two integers is also an integer. Like if we have a and b, we have two integers, then a into b, the product ab will be also an integer. Suppose we have 3, a positive integer, and -4 is a negative integer. So product will be -12 and integer. This is closure property of multiplication. Next we have commutative property of multiplication. If we suppose if we have a and b, these are two integers, then a into b is equal to b into a. It means product of ab is equal to product of ba. That is, if we have a is equal to 3 and b is equal to -4, so a into b will be -12. 4 3 जा -12 और एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या होगा, निगेटिव ही होगा. और b into a, that will be also -12. So commutative property of multiplication is ab is equal to ba. It means a into b, that will be equal to b into a. So we will see next property. Here we have associative property of multiplication, in which suppose we have three integers a, b and c. Then here a into b multiplied by c is equal to a into multiplied by b into c. It means suppose if we have a is equal to 2, b is equal to 3 and c is equal to -1.
So a into b into c, that is 2 into 3 into minus 1. So 6 into minus 1 will be minus 6, and a into b, it means 2 into 3 into minus 1, then that will be also minus 6. Here we have distributive property of multiplication. So suppose we have three integers a, b and c. So a cross b plus c, a cross b plus c is equal to a into b plus a into c. It means suppose we have a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to 3. Then a cross b plus c, पहले फाइंड आउट कर लेते हैं a into b plus c. मैंने कैलकुलेट किया ये 5 आया. अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें a into b plus a into c, 1 into 2 plus 1 into 3, that is also 5. So for any three integers, we have a cross b plus c is equal to a into b plus a into c. Let us see another. Here we have existence of multiplicative identity. What does it mean? Suppose if we have any integer a, then we can write a multiplied by 1 is equal to 1 into a is equal to 1. What does it mean? मैंने 1 से कोई इंटीजर a है उसमें मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, वही इंटीजर मिल गया. लाइक मेरे पास एग्जांपल है 3 है, तो 3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, या 1 इंटू 3 करें मुझे मिलेगा 3. इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 1 से किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई मैं अगर सपोज मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वही इंटीजर मिलेगा. सो हम 1 को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर बाय 0. आपको पता है कि 0 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, 0 ही मिलता है. सपोज अगर मान लो a कोई एनी इंटीजर, सपोज a कोई इंटीजर है तो उसमें 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा. 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर विल बी 0. लेट अस सी अबाउट डिवीजन.